अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फूड फॉर फूडीज़। आज हम चिकन टिक्का एंड पूरी पराठा बना रहे हैं। इस वीडियो में आप होममेड टिक्का मसाला एंड पूरी पराठा डो बनाना सीखेंगे ताकि आप कभी भी ये डिलीशियस कॉम्बो बनाकर एंजॉय कर सकें। अगर ये मज़ेदार रेसिपी देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक एंड शेयर करें and don't forget to press the bell icon. Let's get started.
ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म चिकन टिक्का और क्रंची एंड सॉफ्ट पूरी पराठा रेडी है। हम इनको अनियंस एंड इमली चटनी के साथ सर्व करेंगे और टेस्ट करेंगे। देखें टिक्का perfectly cooked है। It has a beautiful red color and light char like a charcoal grilled tikka. It is deliciously seasoned and the meat is so tender and juicy that it's easily coming apart. Even the breast piece is soft, juicy and perfectly cooked. पूरी पराठा सॉफ्ट एंड स्लाइटली क्रंची हैं। डो में व्हीट फ्लावर को मैदे में ऐड करने की वजह से parathas are not only soft but also light to eat. They don't feel heavy even if you have more than one or two. If you like paratha to be crunchy, then fry it for a few seconds longer. While preparing, make sure to properly rest the dough at all 3 stages to get perfectly soft and light puri parathas. Now, along with the upcoming winter season, you can enjoy chicken tikka and puri paratha during the summer as well. आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।